Loan का EMI is around 32,000. So that's almost 50% of your total pay. I have a problem of impulsive buying. Say for example, iPhone, and I have a lot of watches. My least expensive watch, which is like 22,000. 22,000 का है least expensive Least है. expensive. And आपका total watch collection का कितना cost होगा? Around 1.5 to 2 lakh. I'm in a very stressful financial situation currently. One of the biggest reasons your financial health is not in place is because... Hello and welcome to a new episode of Fix Your Finance. आज हमारे साथ है किरण, जो एक असिस्टेंट कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं and he is working at one of India's biggest companies. Welcome किरण, welcome to the show. Thank you very much. तो आप इस कंपनी में क्या करते हैं? I'm an assistant consultant and I'm working as a scrum master in this company currently. And आप कितने साल से इस कंपनी में काम कर रहे हो? I'm working here from past 12 years. So आपने जब 12 साल पहले शुरू किया था, आपका CTC कितना था? So my CTC was 3.15. 3.15. Okay. आज के दिन कितना है? My current CTC is 10.5. So have you ever considered switching or upskilling to get a better pay? I am upskilling, but I never consider switching. तो अभी आपका monthly in hand pay कितना है? Monthly in hand pay I'm getting around 65,000. Do you have anyone else in the family? I have my wife. Okay. She is a lecturer in a college. She earns around 30,000 a month. Do you have any kids? I have a daughter, 3.5 years old. And as a family, do you consider your income as a sum of both? कि आप लोग separately चलते हो? It is like I take care of my EMIs, investments, and my own expenses. And she is actually paying tuition fees of my kid and all. And again, some of the groceries and all she only takes care of. Okay. So overall जितने भी responsibilities है आप लोगों ने अच्छे से उसे divide कर दिया है. So you live in a PG here in Bangalore. Yeah. तो आप इस PG का कितना दे रहे हो? I'm paying 10,000. 10,000 में क्या क्या included है? Anyway, stay is included and morning breakfast and night dinner is included. And again, it's very near to my office so that I go office by walk. तो आपका commute का भी कोई खर्चा नहीं है. ठीक है. What about your food expenses apart from this? I could say around 5,000 is my food expenses. And back home, maybe once or twice a month we go outside. And, okay. How often do you go to your place? Every week. तो आप कैसे जाते हो उधर? I go by train. Okay, तो उसका क्या expense होता होगा? उसका around 100 rupees per one way charge. So that is again it will be within 1,000, not much. कोई family के fixed expenses है जो आप जिसका आप देख रहे हो? Family का उतना expenses मैं नहीं ले रहा हूँ. Basic things I'm taking care and it will be somewhat around 2,000 to 3,000. Apart from that, do you have a car, bike? Yeah. Okay. I have a car as well as I have a bike. For that, fuel expenses is around 5,000, including car and bike per month. I need to pay for insurance as well as maintenance. Okay. Which is like around 20 to 25,000 a year, which comes around 2,000 per month. 2,000. Okay. You said that you are taking care of one of the big EMIs. Yes. So what is this EMI for? Actually, I bought a plot in Mysore. Okay. So for that, I have taken a loan of around 27 lakh 20,000. And what was the intent of buying this plot? I intended to build a house and settle there. प्लॉट में डाउन पेमेंट वगैरह कितना था? 20 lakh including registration and stamp duty. And ये 20 लाख रुपए आपने सेव किए थे, क्या था? During COVID times, I invested a lot and I got in the stock market. Oh, very nice, very nice. And I also took some 5 lakh from my PF account. Okay. So that covered the 20 lakh. वो लोन का EMI कितना है अभी? Loan का EMI is around 32,000. 32,000. Okay, so that's almost 50% of your total pay. ये तो plot है. इस plot के ऊपर घर वगैरह भी बनाने का खर्चा होगा. So have you estimated that amount? Comes around 50 lakhs. Again, just to build the house. When do you plan to build that house? Currently, I'm not thinking of building a house there. I'm in a very stressful financial situation currently. Okay. So currently, I'm thinking of selling off the plot. And whatever amount I get after paying off the loans and all, I'm thinking of investing back in equity market. Okay. कितने साल पहले खरीदा था आपने? Around one and a half year, not much. तो आपने लोन कितने टाइम के लिए लिया था? Loan I took it for
10 years. तब का इंटरेस्ट रेट कितना था? Interest rate was that time was around 6.7%. 6.7%. आज के दिन कितना? 9%. Now it is increased to 8.95, almost 9. दिस इज द रियलिटी गाइस. कोविड के टाइम पे रेपो रेट्स बहुत गिर गए थे, जिसके वजह से इंटरेस्ट रेट्स फॉर ऑल द लोन्स, ठीक है, स्पेशली होम लोन्स, हैड ड्रास्टिकली गॉन डाउन. बट पिछले 2 सालों में टू कर्ब द इन्फ्लेशन द सेंट्रल बैंक कॉन्स्टेंटली इंक्रीज द रेपो रेट्स, जिसके वजह से सारे लोन के रेट्स भी बढ़ गए. तो जो होम लोन आपने 2 साल पहले लिया था उसका आज इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है. सो इफ यू कीप द सेम EMI देन योर टेन्योर हैज ऑल्सो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. आई वुड सजेस्ट यू कीप प्री पेइंग द लोन. आपको जो भी बोनस वगैरह मिल रहा है आप उसको पे करके अपना जो लोन का जो टेन्योर है ट्राई टू ब्रिंग दैट डाउन टू द ओरिजिनल ड्यूरेशन, वरना आपके जो प्लानिंग वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा ऑफ हो सकते हैं. तो ये प्लॉट जो है आपका, दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई यू आर लिविंग वेरी कट टू कट एवरी मंथ, राइट? बट मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स वाई योर फाइनेंशियल हेल्थ इज नॉट इन प्लेस इज बिकॉज योर इनकम हैज़ नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. अब आपको अपस्किल वगैरह करना चाहिए, आपको आगे जाके कहीं और काम करना चाहिए, इज वॉट आई फील. So I'm working on that. Recently I have done some couple of certifications and all, and also from past 2 years I have changed my role as well, so I'm working on that. तो ये तो हो गई आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की बात. आई होप यू सेल द प्लॉट एंड इन्वेस्ट फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स. आपके क्या गोल्स है अभी? लॉन्ग टर्म क्या गोल्स है? My goals are like for my daughter's education, and maybe I can save her for her marriage. योर किड इज हाउ व्हाट्स She her is age? just 3.5 years. 3.5 years. तो उनकी जो हायर एजुकेशन है वो 15 साल है, शादी लेट्स से 20 साल, और आपका रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60 अज्यूमिंग वो आपका 25 साल का गोल हो गया. ये सारे गोल्स के लिए एक्विटी इन्वेस्टिंग इज द वे टू गो. इसमें रिस्क डेफिनेटली है बट लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कंपाउंड होता है एंड गिव्स यू गुड रिटर्न्स. अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ इट इन द सुकन्या समृद्धि योजना फॉर योर किड. अभी जस्ट गवर्नमेंट ने जस्ट 4-5 दिन पहले स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए. तो SSY का भी आई थिंक 7.5% से अभी 8% हो गया है. एंड दिस इज टैक्स फ्री. वॉट एवर यू इन्वेस्ट एवरी ईयर, वो जो अमाउंट है वो सेक्शन 80C में कवर हो जाता है. वॉट आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू हैव फॉर मी? I have a problem of impulsive buying. I have bought, say for example, an iPhone, and I have a lot of watches, maybe around 12 watches. So which watch are you currently wearing? Currently, it's a This is Seiko a beautiful watch. This is a beautiful watch. Okay. Seiko Field watch, and it is my least expensive watch, which is like 22,000. 22,000 का least expensive है. expensive And which watch. is your most expensive watch? And it costs around 77,000. 77,000. आपका total watch collection का कितना cost होगा? Around 1.5 to 2 lakh. Any other impulsive purchases which are extremely expensive? Apart from this, I have bought a road cycle, and with all the accessories and all, it costed me around 1.5 lakh. Okay, okay. So I can see that you have varied interests. तो मेरी एक थ्योरी है आपके लिए, ठीक है? आप बताओ ये सच है कि नहीं. On a monthly basis, you are restricting yourself a lot. ठीक है कि नहीं नहीं मैं इधर खर्चा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, और उसके बाद 6 महीने 7 महीने में यू आर लाइक फक इट, मेरे को इंडल्ज करना है. दिस इज माई जजमेंट ऑफ the reason why you are making these impulsive purchases. I feel that's correct actually, what you are telling is. तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि हर महीने ही आप अपने लिए एक indulgence budget रखो. I think that will solve a lot, because then you will not have these moments of going unhinged. First tip is have an indulgence budget, ठीक है? According to your expenses and your budgets, आप एक अमाउंट साइड में रखी दो कि हाँ भाई मेरे को ये 5% ऑफ माई इनकम या फिर 10% ऑफ माई इनकम इज माई इंडल्जेंस बजट. आई विल नॉट अकाउंट फॉर एनीथिंग. आई विल कीप बाइंग थिंग्स which I might not need, but it makes me happy at that moment. Second thing, whenever you are making impulse purchases and you're buying things which are not assets, always calculate कि ये चीज खरीदने में आपका कितना टाइम जा रहा है. जैसे आप ये वाला कैलकुलेशन अपने परचेज डिसीजन में डालोगे ना, तो बहुत सारा आपको पर्सपेक्टिव मिल जाता है. थर्ड थिंग इज यू सेड दैट यू एक्ट अपॉन योर इम्पल्स वेरी क्विकली.
कि अगर आपको फोन अच्छा लगा आप 2-3 दिन में वो चीज खरीद लोगे, ठीक है। whenever you like something and whenever you see it for the first time and your mind makes you believe कि हाँ मुझे ये चीज खरीदनी है, don't act on it just then. Wait for like a couple of weeks. The reason why impulse purchases need to be curbed is because आगे जाके अगर आप एक 20-30-40 लाख रुपए का impulse purchase कर लेते हो तो फिर बहुत टाइम तक आपका जो financial health है वो end danger हो सकता है. So you need to curb this. So I wish you all the best. Thank you so much for inviting us to your house. I hope आप आगे जाके better decisions ले और अपना financial health improve करें. I am very confident कि आप ये चीज़ आगे जाके कर पाएंगे. And thank you so much for watching this video till the end. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, then please hit the like button. And if you're watching these videos and not subscribing to the channel, 80% लोग जो videos देखते हैं, वो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते. कर लो यार, आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो होता जाएगा. Goodbye and see you guys in the next one.